यू आर लाइक ठीक है सब इसको मिनिमाइज रहने देगा बाकी आपने क्या खोला है कुछ खुला हुआ तो नहीं है नहीं मैं नहीं करूँ मैं जस्ट Bismillahirrahmanirrahim. Before we start the conference formally today, let me share with you that we are part of the movement that we should be conducting our national events in our national language
unless is there any foreigner who can understand, or then we can completely go for English language only. But in the absence of the foreigners, it will be a hybrid, because most of the speakers will be presenting their presentations in English. लेकिन जो क्वेश्चन है या कोई और ऐसी डिस्कशन है, उसमें आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, उर्दू और इंग्लिश. थैंक यू वेरी मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. हम शुरू करते हैं रब बाबरकत के बड़े नाम से, और मैं बुलाता हूँ हाफिज़ एम मोहम्मद आसिम for the recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Today's conference is being organized as part of our collaboration with the NUST, IESC NUST, where Professor Sher Jamal is leading this coordination from the NUST with RBDC on, and that is in also in collaboration with ACIAR Australia on the water stewardship technologies in the cotton farming systems. And now I invite Professor Dr. Muhammad Irfan, Dean, School of Civil and Environmental Engineering, NUST, for the welcome address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
esteemed and honorable guests, distinguished participants, faculty members, students, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my honor and privilege to extend a warm welcome to you all on behalf of NUST fraternity. I am delighted to commence the Regenerative Agriculture Conference spanned over the next 2 days. The conference serves as the platform for us collectively explore and discuss the transformative potential of regenerative agriculture in sustainable economic growth and food production. The challenges that we face today demand innovative solutions, and your presence here underscores our shared commitment in addressing these challenges through collaborative efforts. As we embark upon the intellectual journey today, I encourage you to engage in meaningful discussions, conversations, exchange insights, and forge connections that transcend the boundaries of our respective disciplines. The diverse expertise gathered here promises a rich tapestry of perspectives that will undoubtedly contribute to the depth and breadth of our discussions over the discourse of next 2 days. NUST has always been at the forefront of promoting academic excellence and research initiatives, and this conference exemplifies our dedication in staying ahead in the evolving landscape of agriculture. The exchange of ideas in the discourse of the conference presentation and proceedings has the potential to share the future of regenerative agriculture and redefine our approach towards sustainable development. I would like to express my sincere appreciation to the organizing committee, speakers, and sponsors for their diligent efforts in making this conference a reality. Your commitment to the success to this event is pivotal in fostering collaborative environment whereas ideas flourish and innovations thrive. Such conferences are the need of time as the country has recently embarked upon a new agriculture project under the Green Pakistan Initiative, a joint effort between Pakistan Army and the government of Pakistan aimed at enhancing the agriculture development in the country. Let me share a few foods for thought that I'm sure that the worthy participants would be pondering during the discourse of the conference. While we discuss the dividends of regenerative agriculture for the cotton growth, we must discuss this and suggest solutions for few of the challenges that Pakistan agriculture sector faces today. Uh, that include, but not limited to, the impact of climate change and the varying climatic patterns that we are facing right now, unavailability and poor quality of fertilizers, degradation of soils and soil infertility, and that results in the low yield and causing the production gap. There is a significant increase required for the agriculture's output that essentially is required for to meet the requirement of the country in our future. So it is important that we must discuss few of these challenges and suggest few of the solutions related to that. Lastly, uh, let us seize the opportunity to learn, connect, and inspire one another. May the conference be marked by the meaningful dialogue, profound insights, and long lasting collaborations among the organizations and academia. Once again, I extend my warmest welcome to each one of you and wish you a fruitful and professionally rewarding experience at the Regenerative Agriculture Conference at H12 Campus NUST. I thank you. And we are trying to cover most of the aspects of regenerative agriculture. We will be questioning ourselves why regenerative agriculture. And when we look at
the new momentum, new movement for the regenerative agriculture. So that takes us back to 70s when a single person from Japan stood up and talked about one straw revolution. And then people were laughing at him that how a one straw can bring a revolution. His idea was we should not be wasting a single rice straw. It should go back to the soil. That was the idea that he started with. And he approached youth, farmers, and it took him lifetime to get it to few farmers here and there. But the idea he promoted is provides us the basis of even the present movements of sustainable agriculture. But that was a kind of research kind of initiatives here and there. And in 80s, Burnt Land Commission, that was the UN Commission on how we are doing with this development. Is it sustainable? Answer was no. That was where the basic question was raised on agriculture also, that the way we are, though we are able to uh, produce more and more food for the growing population, but our food producing, the resources needed for food production are deteriorating over time. That means it's questionable whether we can continue to do what we are doing and then provide food for the growing population, or we have to rethink about that. That was in 1985, and then 87 they got the report Our Common Future. From there was debate on sustainable development, 1992 UN UNEP report, and then summit on sustainable development. And then that started stirring up the new ideas for development and research. And in 90s, sustainable agriculture programs here and there were started as pilot projects or as a research project, like farming system research was a good program where multidisciplinary teams identified farmers' constraints and opportunities, and then devise strategies how we can maximize benefits from the opportunities, and how we can minimize the hurdles created by the constraints. So sorry, I'm feeling my bad throat and fever. I'll be I'll try my best that it can last for this session. Um, Now, after having different programs like conservation agriculture, zero tillage, and then in cotton, Better Cotton Initiative, this Cotton Connect, Fair Trade, and organic, and now regenerative agriculture. Most of these initiatives are adopting it as a cotton production technology. The question we raise is that comes to our mind that most of the technologies that Better Cotton, Cotton Connect, conservation agriculture, they talk about is they are there since decades. What are the reasons why farmers are not picking that up, and how we can make it that create conditions that they adopt it and widely accept it.
There are always two tools that we can use. Either we push farmers to do that or pull them through creating demand. Whether we accept it or not have changed. It's changed in a way that we used to produce what we like to produce. Now it is changed to the conditions that you have to produce what the demand, the market like you to produce. Those who will not go with it will miss the train. Those who are in the export market have to accept it. Those who are not in export market might go little longer without adopting these policies. Unfortunately, most of the developing countries, including Pakistan, for us, whatever we were doing, will continue to do that and name it to the new initiative. So that means our production technologies didn't change drastically to adopt the basic philosophies or principles of the new sustainable agricultural initiatives or policies. That to me is the absence of the policy framework. We will be having sessions and having the good brains who've been involved in different policy making processes to see where we are and how we can provide the policy framework for RA also, so that this time it seems like it will be a big initiative and we'll have to go with it, and it's something that will be visible on the ground. It's not like there's better cotton, but we cannot see from where it is better. So here, the soil will tell the story whether we are doing RA, regen agriculture, or not. And here in the conference, we are covering almost all sustainable cotton production initiatives working in Pakistan, like Better Cotton Initiative, Cotton Connect, Fair Trade, organic agriculture, organic cotton production. So we will see what kind of initiatives are already there, what kind of technologies they are already using, how we, with the introduction of regen agriculture principles, we can improve our implementation and improve farmers' conditions. So we will be talking about these initiatives, and the main focus in Regen Ag is regenerating soils. When we say regenerating agriculture, mainly the focus is regenerating soils. And then we cannot regenerate soils without having the good biodiversity at the farm. We cannot regenerate soils without adding the biomass to the soils. Today, what we are doing, adding more kind of fertilizers and other uh, additional chemical nutrients and taking little more than that from the soil, so deteriorating soil every year. So now we are saying we should be we should ideally reach a stage where we are extracting less and adding more, and only then we can leave our food production resources in a better shape for our next coming generations. That is the idea. And the last sessions of the conference will be focusing on the new policy frameworks needed if we really want to make it a success. And thank you very much for all of you.
for being here with us. We have got almost all, if not all, almost all, good brains on the cotton production, sustainable agriculture work, particularly policies and technologies. To have gathered information and technologies from all over the world, from their initiatives too, to share and discuss in different sessions. Now, uh, Mr. Asad Surti from Surti Private Limited, uh, we have a recorded message for the conference. We will play that. Assalamu alaikum, everyone. I'm Asad Surti, and I would like to welcome you all to the National Conference on Regenerative Agriculture in Cotton Farming Systems. Surti Enterprises is one of the largest vertically integrated organizations in textiles in Pakistan. We have gained recognition for our commitment to sustainable and ethical practices in the fashion industry. Surti is proud to be the first organization in Pakistan to have submitted comprehensive targets for our near term, which is 2030, net zero, which is 2050, as well as our forest, land, and agriculture flag emissions for the Science Based Targets Initiative. We are committed to developing, instituting, and implementing a 1.5 degree centigrade aligned GHG mitigation target set in support of the great work being done world over by the Science Based Targets Initiative. And we are also proud to be members of Pakistan's Net Zero Coalition. Our dedication to sustainability extends to green energy with solar and wind power across our facilities. Additionally, we are also proud to share that we hold the AWS Gold certification for responsible water consumption, emphasizing our focus on environmental stewardship. At Surti, our Second Life recycling denim project transforms denim waste into eco friendly products, promoting a circular economy and reducing environmental impact. Soki, which is the Surti Organic Cotton Initiative, which is validated by the Organic Cotton Accelerator OCA, is a project intended to revolutionize the cotton farming industry. We're gradually shifting towards a completely sustainable and regenerative form of cotton production for the manufacturing of our products. Soki will not only build capacity for organic cotton, but also enhance the livelihoods through financial inclusion, vocational training of women leading to better livelihood opportunities, enhancement of health and education services in the area, and provision of clean water. We recently procured the largest tranche of in-conversion cotton certified by Control Union Sri Lanka out of Balochistan at our factories. We would like to thank government institutes, educational and research institutions, private organizations, NGOs, certification bodies, and of course the farmers of Balochistan for contributing their part to the Soki project. Today's discussion, I hope, will help us to set our agenda and our goals for a sustainable future of cotton farming. Thank you. Assalamu alaikum. So, as we hear that Surti is ready to set their goals and targets, and we should all be ready in all our in our spheres to revisit, reset, rethink, and reset our targets if we are really want to be not only part of regen agriculture movement, rather staying ahead of others, because it's always good when you are in a race and then suddenly you have to run backward. Those who are in the end always can take benefit. So we are far behind on what
industrial agriculture means in the world. But now, in regen and sustainable agriculture, our conditions are better to lead the movement. And we have good initiatives, I'm sure, that can help us lead the movement. And we can also, I'll invite Dr. Yusuf Ali to share little more about the Surti's work on cotton initiatives, organic cotton initiatives. Thank you, sir. I am Dr. Mohammad Yusuf Ali. I am Senior Manager, Sustainable Agriculture Interventions in Surti Enterprises Private Limited. Surti is a leading textile industry, which is manufacturing denim for most of the leading brands of the world. We are dealing with most of the sustainable threads. Surti has successfully attained sustainability, traceability, and circularity. So today we will be presenting a short video before you on our Surti Organic Cotton Initiative for a better understanding. In the heart of Balochistan's majestic landscapes, where nature's beauty meets human ambition, a profound revolution is taking root. Welcome to the Surti Organic Cotton Initiative, where sustainability, empowerment, and ethical values come together to shape a better tomorrow. WWF Pakistan started its Sustainable Agriculture Program 2 decades ago. One of the projects that we are implementing is promotion of organic cotton in Balochistan. We appreciate the support extended by Surti to make this program a success. As the sun kisses the cotton fields, our organic crops thrive, relying on natural methods of pest control and soil improvement. Through the Organic Cotton Accelerator, we validate our certification and ensure fair payments to our farmers. First, Organic Cotton Accelerator is an international organization. It is a Netherlands-based organization working on the supporting the farmers through continuous improvement. 2 साल ब्रांड्स के साथ कमिटमेंट डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेड ना होते हुए भी जिम्मेदारी के साथ ऑर्गेनिक कॉटन को और ओका वैलिडेशन के प्रोसेस को सपोर्ट भी किया और सिर्फ सर्टिफिकेशन तक सूरती ने इसको छोड़ नहीं दिया बल्कि उसको आगे लेकर ट्रेसेबिलिटी की फील्ड के अंदर भी उन्होंने अपनी कमिटमेंट और अपनी मेहनत उसी तरह ही जारी रखी। जिनिंग की सतह पर भी सूरती का अपना स्टाफ भी वहाँ मौजूद था, जहाँ इस बात का ख्याल रखा गया कि जो सेग्रीगेशन है ICS वाइज कॉटन को रखा जाए। Supported by the Worldwide Fund for Nature and the Organic Cotton Accelerator, our farmers sow the seeds of change, nurturing the land with care and dedication. At the Surti Organic Cotton Initiative, we prioritize the essentials for a sustainable future. Non-genetically modified seeds are distributed to our dedicated farmers, ensuring organic growth without hazardous chemicals. सूरती कंपनी की तरफ से पिछले साल हम लोगों को बीज मिला था, हम लोगों ने मेहनत करी है, इसमें भी अच्छा फायदा हुआ, इसका अच्छा रिजल्ट आया। अभी इस दफ़ा भी आए हैं सूरती वाले, हमें ताउन कर रहे हैं बीज का, स्प्रे का। Our farmer field schools empower farmers with knowledge and skills, paving their way towards success in sustainable practices. सूरती जब से आया है, नाल में हमारे जो कॉटन का जो पैदावार है उसमें बिल्कुल इजाफा हुआ है। आगे जो इसका नाम जा रहा है वर्ल्ड में, ये भी इतनी का कोशिश है। इनका जो तावन रहा है नाल के लोगों के साथ, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। The fruits of our labor emerge as skilled hands delicately pick the finest organic cotton. Ensuring the integrity of our organic harvest, we carefully procure and transport the cotton from the farm to the gin. With the highest standards of quality, our ginning process reflects our commitment to organic excellence. Deft hands and modern technology spins the cotton into yarn,
ensuring a sustainable and high-quality product. Transparency and traceability are at the core of our practices. Continuous oversight, monitoring, and evaluation in partnership with WWF and the Organic Cotton Accelerator drive our commitment to a brighter and sustainable future. हम लोग उन कम्युनिटीज़ तक पहुंच रहे हैं जो बहुत ही हार्ड रियलिटीज़ के अंदर रह रही हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी और प्लस दूसरे नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी, और हम लोग उन तक पहुंचते हैं और उनको भी सपोर्ट करते हैं, और वही सपोर्ट जो है वो फिर आगे हमें उस फार्म में जो ऑर्गेनिक कॉटन या दूसरी ऑर्गेनिक फार्मिंग की फार्में हमें जो मिलती है, आई थिंक वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है. Beyond sustainable farming, we extend our impact to uplift Baloch women through our partnership with Doge. Training on Balochi embroidery empowers them to create exquisite products. सूरती इंटरप्राइज ने हमसे रब्ता किया, जो कि ऑलरेडी नाल में ऑर्गेनिक कॉटन के ऊपर काम कर रही थी, और उनका भी ये था कि जो उनके फार्मर्स हैं किस तरह से उनकी फीमेल्स को मार्केट के लिहाज से काम करना सिखाएं, बेसिकली फैब्रिक पे, कलर कॉम्बिनेशन पे, और किस तरह से जो बलूची जो है ट्रेडिशनल उनका ड्रेस पे, जीन्स पे और लेदर पे ला सकते हैं. हम इसके फेज़ 2 में दाखिल हो रहे हैं, और उसमें भी हमारा टारगेट यही होगा कि हम यहाँ के फीमेल्स को एम्पावर करें और इनको मार्केट तक लिंक करें ताकि इनका रोज़गार चलता रहे, बंद ना हो. Every stitch carries the story of determination and resilience. All profits from their remarkable work go directly to these talented women, creating opportunities and a brighter future for their families. Join us in this journey towards sustainability, where every thread weaves a brighter future. Together, let's nurture this earth, empower our communities, and wear our values with pride. Thank you for watching. Now, I would request Hafiz Muhammad Baksh, who is representing here WWF, one of our leading partner in implementation of SOCI project, to please share his thoughts on role of Surti for promotion of sustainable agriculture focusing SOCI project. Please. Assalamu alaikum ji. Thank you so much, Surti, for giving some time to represent WWF Pakistan as well as the SOCI project. I will start the words from Dr. Shahizia that sustainability, the term sustainability is not new for all of us because this was the thought of, I think, 1950s. कि जब वहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की कुछ बातें स्टार्ट हुई और फिर वो होते होते मेच्योर हुई जाके 1980s में कि उस वक्त इसको एक फॉर्मल तरीके से अक्रॉस द ग्लोब लॉन्च किया गया कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज जो एक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर थी उसके जो एनवायरनमेंट पे डैमेजेस आ रहे थे या उसके जो इम्पेक्ट्स आ रहे थे नेगेटिव, उसको किस तरह मिटिगेट किया जाए. 90s में पाकिस्तान में भी ये इनिशिएटिव जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का वो स्टार्ट हो गया और उसमें WWF पाकिस्तान जो है उसने भी अपना काम जो है इस सस्टेनेबल फार्मिंग पे स्टार्ट किया. इसमें जो डिफरेंट वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स से लाइक BCI, ऑर्गेनिक कॉटन, इस तरह के जो भी इनिशिएटिव्स थे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग पे, उस पर एक फॉर्मल तरीके से फार्मिंग कम्युनिटी के साथ काम स्टार्ट किया गया. इन कंटिन्यूशन विद दैट इनिशिएटिव्स वी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द ऑर्गेनिक कॉटन एज वेल. उसमें हमारा जो बेस एक इनिशिएटिव था वो BCI था. BCI में एक काफ़ी बड़े वॉल्यूम पे हम पाकिस्तान में काम कर रहे थे. तो उसी काम को तो आगे बढ़ाने के लिए हमने ऑर्गेनिक कॉटन पे अपना काम स्टार्ट किया बलूचिस्तान में, बिकॉज ऑफ जो इन्वायरमेंट थी बलूचिस्तान की वो बड़ी फेवरेबल थी फॉर ऑर्गेनिक कॉटन कल्टीवेशन.
So, with the support of C&A Foundation, which was the foundation from a major cotton brand C&A, we started work in Balochistan in 2015. एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे स्टार्ट किया गया, और उस पायलट प्रोजेक्ट को फिर एक रेगुलर प्रोजेक्ट में 16 से लेके 20 तक एक बाकायदा प्रोजेक्ट की शक्ल में स्टार्ट किया गया। तो उस प्रोजेक्ट की जो पहली सक्सेस हमें मिली, वो एक कॉन्टिन्यूस 3 इयर्स की जो एफर्ट्स थी, 16, 17 और फिर 18 में जाके हमें एक पहली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कॉटन बेल जो है वो पाकिस्तान की वो प्रोड्यूस हुई। वो प्रोजेक्ट चूँकि 20 में उसने फेज़ आउट हो जाना था, तो उस वक़्त डेफ़िनेटली हमारे एंड पे एक डब्ल्यूडब्ल्यूएफ पाकिस्तान, एक जो मेजर स्टेक होल्डर्स था इसमें, सस्टेनेबल जो इनिशिएटिव थे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग जो हो रही थी, उसमें हमारी अब ये थॉट थी कि हाउ दिस इनिशिएटिव विल सस्टेन इन पाकिस्तान इन केस कि अगर C&A फाउंडेशन फेज़ आउट कर जाता है, प्रोजेक्ट एंड हो जाता है, तो वेयर वी विल स्टैंड। दैट मीन्स कि अगर C&A फाउंडेशन फेज़ आउट करता है, तो अब हमारे पास कोई और ऐसी होप नहीं नज़र आ रही थी कि जी हम इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑर्गेनिक कॉटन फार्मिंग को सस्टेन कर सकें, इसको कंटिन्यू कर सकें। तो इस वक्त मैं आई विल हाईली अप्रिशिएट सूरती कि उस टाइम पे 1920 में इन्होंने WWF के साथ कमिट किया कि वी विल कंटिन्यू, वी विल फंड एंड वी विल सोर्स the organic cotton cultivation in Pakistan. So this was a big initiative from Surti, और एक सौकी की फॉर्म में जो अभी डॉक्टर यूसुफ साहब जिक्र कर रहे थे, नाल में एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट के जो मेजर KPIs थे, दैट वाज कि हम कोई 1500 फार्मर के साथ हम काम करेंगे, और एटलीस्ट वी विल कवर around 10,000 acres of cotton land and shift them to organic cotton cultivation, and as well as its certification through involving the certification bodies जो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही थी, like कंट्रोल यूनियन। सो जो इनिशिएटिव इसमें बेसिक उसका 2-3 फंक्शंस होते हैं कि जी आप फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, फिर उसकी कैपेसिटी बिल्डअप करते हैं इन उस ग्रुप में, और जो भी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, उस पर उनकी कैपेसिटी बिल्डअप करते हैं। सो सूरती की पार्टनरशिप के साथ, सूरती की एक बड़ी जेनरस सपोर्ट के साथ जो फंडिंग थी, उसमें वहाँ पे नाल जो एक बड़ा टफ एरिया है बलूचिस्तान के हवाले से, आप लोग जानते हैं वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, आपकी अप्रोच है वहाँ पे, ऐसा जो आपके सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं उसको डेवलप करने के लिए, दैट वर बिग चैलेंजेस for all of us, like Surti or WWF Pakistan, and also the Agriculture Extension Department was also our main frontline partner. So we started formal capacity building with a very rigorous schedule of training sessions, और उनको जो भी ऑर्गेनिक की जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस हैं कि हाउ टू सस्टेन द सॉइल फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल मीन्स ऑफ जो प्रैक्टिसेस हैं, तो उसमें बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ है, कंपोस्ट फार्मिंग है, उसके अलावा जो आपकी रिस्टोरेटिव क्रॉप्स हैं उसकी प्रमोशन है, सिमिलरली नॉन जीएमओ सीड के हवाले से, बिकॉज नॉन जीएमओ सीड जो है वो एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में। सिमिलरली जो पेस्टिसाइड ऑल्दो के मार्केट में मौजूद हैं, केमिकल पेस्टिसाइड मौजूद हैं, उसका एक अल्टरनेट जो मार्केट में मौजूद नहीं होता, लेकिन उसमें ये है कि फार्मर्स को जो लोकल हमारे जो वाइल्ड स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, उसके एक्सट्रैक्ट निकाल के, लाइक नीम है, दतूरा है, आक है, कुर्तुमा है, इन चीज़ों को क्रश करके इसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको अपनी क्रॉप्स पे वो स्प्रे करके, ताकि पेस्ट का जो अटैक है उससे बचा जा सके। तो ये सारी वो जो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं जो कि एनवायरनमेंट को जो एक उन केमिकल का एक होता है, थ्रेट होता है, या उस पे उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, उसको कम से कम करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए हम ये एक अल्टरनेटिव जो प्रैक्टिसेस थी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वो फार्मर्स को उस पर ट्रेन किया गया।
So farmers adopted those practices, or accordingly they followed the principles of organic cotton and its certification. And alhamdulillah वो हमने जो ये इनिशिएटिव हमने 2020 में हमने स्टार्ट किया 2021 में, और 2022 में after 1 year, only 1 year, we were able to have the in conversion cotton from our farmers groups. So this was a big success कि आप सिर्फ एक साल में फार्मर्स पे हम सब ने मिल के, हम जो तीनों पार्टनर्स थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, WWF पाकिस्तान एंड डेफिनेटली द सुरती, इसकी सुरती की टीम, हम सब ने एक जॉइंट एफर्ट के साथ उसको एक सक्सेस स्टोरी की तरफ लेके गए. सो ओवरऑल डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट ने एक इन्वायरमेंट क्रिएट की इस हमारे पाकिस्तान में, कि बाकी टेक्सटाइल ग्रुप्स जो हैं इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखते हुए बाकी टेक्सटाइल ग्रुप्स भी इस पे इंस्पायर हुए, और उन्होंने इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के हवाले से, ऑर्गेनिक कॉटन के हवाले से फंडिंग और उसकी सोर्सिंग के हवाले से कमिटमेंट्स जो हैं वो स्टार्ट की. So I can see that the Surti laid a foundation of organic cotton cultivation in Pakistan, उसकी फंडिंग और उसकी सोर्सिंग में. और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 8 बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑर्गेनिक कॉटन की, बलूचिस्तान प्लस सिंध और पंजाब प्रोविंसेस में वो चल रहे हैं, डिफरेंट जो हमारे लोकल टेक्सटाइल ग्रुप्स हैं उनकी फंडिंग और सोर्सिंग से. So thank you so much. I would like to appreciate Surti कि उनकी एक बड़ी जानस सपोर्ट और एक कमिटमेंट की बेस पे हमें इस एक जो ऑर्गेनिक कॉटन जो इनिशिएटिव है उसको कंटिन्यू रखने में हेल्प हुई. तो I would also thank you to Dr. Shaizia, our BDC, for organizing such a good initiative, such a good conference, because अभी जो वही जिस तरह डॉक्टर शाइजिया बात कर रहे थे कि सस्टेनेबिलिटी इस वक्त एक मेजर ग्लोबल एक कंसर्न है, कि ना सिर्फ इन्वायरमेंटल बट आल्सो एज वेल एज द इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एज वेल. सो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर जो इस वक्त हम भी सोच रहे हैं कि दिस वन इज़ द नीड ऑफ टाइम. हमें अपने आप को ओवरऑल ना सिर्फ कॉटन फार्मिंग सिस्टम बट ओवरऑल आवर जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है हमें उसको रीजन की तरफ लेके जाना होगा. अदरवाइज शायद अगले चंद सालों में हमारे पास ऐसी लैंड ही ना हो कि जिसको हम कल्टीवेट कर सकें और अपनी फूड क्रॉप्स ले सकें. बिकॉज दिस वन इज़ द स्टडी ऑफ FAO कि अगर हम इसी तरीके से जो कन्वेंशनल फार्मिंग है जिस तरीके से हम कर रहे हैं, अगर हमने इसको कंटिन्यू किया तो आई थिंक कि जो एक स्टडी कहती है कि 1950s में हमारे पास हो सकता है लैंड ही ना हो कि हम अपनी फूड क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर सकें. तो हमारे लिए एक फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है. सो this one is the need of time, that we have to shift our cropping system into regenerative agriculture in order to support our soil, in order to support our environment. This one is the, I think, the need of time. Thank you so much, Ji. Thank you so much. Thank you so much, Hafsa, for briefing the participants on Surti Organic Cotton Initiative and especially Organic Cotton Initiative in Pakistan. Surti has taken a step towards traceability. Now we are in the phase that we have farm to fashion full traceability. Farmdar is our partner who has supported us for digitalization of our Soki project as well as for traceability. So I would request Farmdar to please share their thoughts, their working, and the system, how they developed for strengthening the Surti Organic Cotton Initiative. Thank you, Dr. Saab. Assalamu alaikum, Nazreen. My name is Mohammad Bukhari. I am the co-founder of Farmdar. Farmdar एक agri-tech startup है, and we use digital technologies, artificial intelligence, and data to support digitization of agriculture in Pakistan.
It's a pleasure to be here because actually मेरा background farming में है और मैं साउथकाबाद से हूँ, so cotton is something that actually I grew up with, and it's unfortunate कि उस area में अब cotton इतनी proliferate नहीं हुई भी जितनी पहले होती थी. I remember heaps and mountains of cotton as I was growing up as a child, so I have amazing memories associated with it. And it's been a pleasure actually to support Dr. Saab and Surti Enterprises in digitizing all of their efforts that they are doing in NAL with WWF, including not only digitizing all of the training of farmers, all of the sort of initiatives that with WWF as a partner, जो फार्मर्स को फॉर एग्जांपल सीड्स प्रोवाइड की जा रही हैं या उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वी हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू कम्प्लीटली डिजिटाइज दैट. इसके साथ साथ हमने फार्मर टू जिनर एंड बहुत डिटेल के अंदर ट्रेसिबिलिटी भी अनेबल की है. I would just like to quickly run through some slides to show you some of the initiatives that we are doing. So our challenge in that area was really कि ये जितने भी initiatives सूरती और WWF उस नाल वाले एरिया के अंदर कर रहे हैं, इनको एक्चुअली किस तरीके से डिजिटाइज कर लिया जाता है. अब WWF आपको पहले बता रहे थे कि एक्चुअली एरियाज बहुत रिमोट हैं. So one of our first challenges was, what do you do when there is no access to internet available? How do you digitalize? So we actually had to create technologies that work even offline, even in an environment where आपके पास internet available नहीं है. You are still able to go and at a farmer level digitize farmers, their fields, and actually collect all the important information regarding that farmer, which can then be shared with organizations like, for example, the Control Union or other bodies जो आपको certifications देती हैं. इसके साथ साथ वो एक जियोग्राफिकली भी एक चैलेंजिंग एरिया है, एंड आई वुड लाइक टू थैंक WWF एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ बलोचिस्तान, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ऑफ बलोचिस्तान, बिकॉज उन्होंने हमारी फील्ड टीम्स की रहनुमाई की और हमें उन जगहों पे लेके गए जहाँ पे एक्चुअली हम उन फार्मर्स को सही तरीके से डिजिटलाइज कर सकें. डिजिटलाइजेशन के बाद हमारे पास ये चैलेंज प्रेजेंट किया गया था कि जब एक बेल प्रोड्यूस होती है तो उस बेल को वो ऑल द वे बैक टू द फार्मर्स फील्ड ट्रैक करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ वो उस फार्मर की फील्ड की कई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाना चाहते हैं जिससे पता लगे कि एक्चुअली उस फार्मर की प्रैक्टिसेस क्या रही हैं over the course of the cotton cycle. So we tracked things like soil organic carbon, we tracked things like productivity zones, we tracked things like nitrogen uptake, all using satellites on a regular basis, on a weekly basis. We also have artificial intelligence models, which we have built ourselves. The distinguished dean will be very happy to know that our technical team, and in fact our technical lead that has worked on this project, are from NUST. I'm also very proud to say कि actually हम जितनी भी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बिल्ड कर रहे हैं, अब हमें उसको जिस तरह आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तान में, द एक्सपोर्ट एंगल, we are now starting to export the technology that we are building in Pakistan. 3 months ago, we actually opened up an office in Brazil, in Porto Alegre, and we are actually वहाँ पे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर और इन पर्टिकुलर रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर टेक्नोलॉजीज डिसेमिनेट कर रहे हैं. Digital traceability, I just want to perhaps touch quickly upon what does it mean. इसका पहला एस्पेक्ट ये था कि हमने फार्मर को completely digitalize करना है, यानी कि आपको उसके exact land की boundary का पता है. You know what the exact acreage of the cotton that he is growing is. You know कि उसने वो cotton कब लगाई, और एक्चुअली उसके ऊपर हिस्टोरिकल डेटा क्या है उस क्रॉप का. इसके साथ साथ फार्मर का बायो डेटा या उसके डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी हम कैप्चर कर रहे थे थ्रू अ वेब एप्लीकेशन एंड अ मोबाइल एप्लीकेशन. Once that is done, essentially when the farmer takes his cotton to a broker or to any sort of intermediary market, वहाँ पे भी जितनी भी transactions हो रही हैं उनको हम track कर रहे हैं through this application. This includes all transport between brokers to ginners. It includes any kind of important information for Surti or indeed for WWF. Because this application is built by us, we have the ability to customize it completely as well.
So any important information that is added to this project as a result of the learnings of this successful project, we will be able to incorporate that and add lessons learned into the next phase of the project, inshallah, when it expands to more regions, more geographies, and other areas as well. इसके साथ साथ the end result is कि जब एक बेल प्रोड्यूस होती है तो उसके ऊपर एक QR कोड होता है. उस QR कोड को जब आप स्कैन करते हैं तो आपको ये भी पता लगता है कि वो बेल किस बैच से आ रही है. When you actually, और उस बैच का भी एक यूनिक कोड होता है. उस बैच के अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि वो बैच किन हीप से बना था, और आप ईच हीप के अंदर ये देख सकते हैं कि कितने कंट्रीब्यूटिंग फार्मर्स थे. और जब आप एक्चुअली फार्मर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि उस फार्मर की क्या डिटेल्स थी. आप उनकी ज़मीन की बाउंड्री को भी देख सकते हैं, और एक्चुअली आप उनकी ज़मीन की बाउंड्री की हिस्ट्री को भी देख सकते हैं ऑन अ वीकली बेसिस, बिकॉज वी यूज सैटेलाइट मॉनिटरिंग. This application is essentially what we use to go and digitize farmers in the field. As I mentioned कि ये online और offline चलती है, तो ये particularly remote areas के लिए भी काफ़ी useful है. और इसके अंदर सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी इंटीग्रेट होती है, तो हमें एक दफ़ा फार्मर की फील्ड की बाउंड्री मिल जाए तो हम उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं. What we are also able to do is remotely detect कौन से crops कहाँ पे grow कर रहे हैं. We've done this extensively across Pakistan and other countries as well. This year, inshallah, we are on track to exceed 200 million acres of coverage on our product called Crop Scan, जो हम पाकिस्तान, मोरक्को, पेरू, ब्राज़ील, चिले, अर्जेंटीना के अंदर एक्चुअली अभी ये लाइव है. इसके साथ साथ फील्ड लेवल के ऊपर हम लोग काफ़ी चीज़ें फार्मर की मॉनिटर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो रिपोर्ट्स हैं. एक प्रोडक्टिविटी जोन्स. व्हाई आर दीज इम्पोर्टेंट? बिकॉज आपके जो एफर्ट्स हैं सूरती के और WWF के टू एक्चुअली encourage the farmer to grow better cotton more efficiently, this profiles the land and it tells you using remote sensing कि आपकी land के best areas कौन से हैं जहाँ पे actually आपको cotton उगानी चाहिए. There are perhaps some areas where either the soil or other conditions are not right and they will probably not result in good yielding cotton. So we are able to tell that remotely and then actually आपके efforts को हम point कर सकते हैं so that they are more fruitful and you are selecting the right parcels of land to actually make sure that proper cotton is being grown. इसके साथ साथ we actually are able to, using satellites, track soil organic carbon. So you can track this throughout the crop cycle. आप शुरू में भी देख सकते हैं, और अगर आप फॉर एग्जांपल मेजर करना चाहते हैं कि आपकी ये जो रीजेनरेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, you can actually do a pre and post analysis of soil organic carbon to see over the course of many years कि आप soil organic carbon की improvement लेके आ रहे हैं. So it allows a certain sense of measurability into all of the initiatives that are taking place on the ground. इसी के साथ साथ हमारी कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो एक्चुअली फार्मर के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं. वी करंटली इन पाकिस्तान हैव 66,000 फार्मर्स हु आर रजिस्टर्ड विद अस. दे आर यूजिंग दीज रिपोर्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. इसके अंदर हम फार्मर्स को एट मल्टीपल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द क्रॉप साइकिल रिपोर्ट्स देते हैं, लाइक प्लांट हेल्थ, प्लांट स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस, nitrogen uptake, which allows them to actually make the right interventions at the right time in the field. इसके अलावा जो डिजिटाइजेशन की मैंने ओरिजिनली बात की थी, हमें डॉक्टर साहब ने सूरती की तरफ से एक बहुत एक्सटेंसिव फार्मर बुक का रिकॉर्ड दिया था जो उस वक्त एनालॉग था. एंड हमारा चैलेंज ये था कि इसको बहुत जल्दी से आप एक ऐसे फ्रेमवर्क के अंदर लेके आएँ कि ये पूरे का पूरा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाए. It was a very difficult challenge because actually वो बहुत extensive record था. Almost जितनी भी interactions WWF की और सूरती की farmers के साथ field में हो रही हैं, जैसे आप earlier देख रहे थे कि training sessions होती हैं, उनको seeds distribute की जाती हैं, pheromone traps distribute किए जाते हैं. ये सारी चीज़ें हमने एक application में लेके आए हैं जहाँ पे actually इसको digitize कर दिया गया. So आपको exactly पता होता है कि कौन सा farmer था, उसको क्या चीज़ distribute की गई, किस date पे distribute की गई, कौन से आपके जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स हैं उनके कौन से नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, इस फार्मर का पासबुक नंबर क्या है या उसका यूनिक कोड क्या है, उस फार्मर के क्या कमेंट्स थे. तो आपके पास एक रिपोजिटरी ऑफ डेटा बन जाती है जिसे आप बड़े इजीली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो टू एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट्स फॉर सर्टिफिकेशन और इंडीड वंस यू गेट मल्टीपल ईयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, आप उसको खुद भी क्वेरी करके उसके अंदर से इंटेलिजेंस निकाल सकते हैं. इसके साथ साथ हमने एक एप्लीकेशन इनेबल की है जिसमें QR कोड्स के ज़रिए आप बेल को
ट्रैक कर सकते हैं ऑल द वे बैक टू द फार्मर। ये किस तरीके से होता है कि बेल के ऊपर एक क्यूआर कोड इशू होता है, उस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करें तो उस बेल के अंदर जो बैचेस होते हैं वो नज़र आ जाते हैं। उन बैचेस के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो जितने भी हीप्स से वो बैच बना है आपको उनकी डिटेल्स भी मिल जाती हैं, और इस लेवल तक सारों के इंडिविजुअल क्यूआर कोड्स होते हैं। इसके साथ साथ एक हीप के अंदर कितने फार्मर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, कौन से ट्रांसपोर्टर्स थे जो उसको उन फार्मर्स से एक्चुअली वो कॉटन लेके आए हैं, उसमें कौन से ब्रोकर्स इन्वॉल्व थे, ये सारी चीज़ें आपको एक्चुअली उसके अंदर नज़र आ जाती हैं। इसके साथ साथ फार्मर्स भी नज़र आते हैं, और अगर आप फार्मर्स के ऊपर क्लिक करें तो जितनी भी उन फार्मर्स की डिटेल्स हैं जो आपकी फील्ड बुक में कंटेंड हैं, जो मेरा ख्याल है कोई 18 या 20 पेजेस की फील्ड बुक थी, वो सारी डिटेल्स अब डिजिटलाइज हुई हुई हैं और आप उनको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इस फार्मर ने मुझे कॉटन सप्लाई की जिससे ये बेल अल्टीमेटली बनी, और इस फार्मर की इस मौजे से, इस डिस्ट्रिक्ट से, इस फील्ड से ये बेल तैयार की गई है। इस फार्मर की ये प्रैक्टिसेस थी over the course of the crop cycle. I would like to just thank again Dr. Yusuf, Surti Enterprises, WWF for helping us in the field, and I'll leave that. Thank you. Yes, from farm to fashion, that reminded me the first international conference that RBDC organized in Izmir. Its title was From Farm to Fashion. And Dr. Shafiq was also with us, but most of the international stakeholders were present there. Another initiative of RBDC was Katorani, that is also from farm to fashion, because it's all women cotton value chain. Idea was that we trained women in producing cotton, ginning, spinning by hand, and then using, you can see outside some handlooms that they used to make their products that was used in the fashion designing. And then some of the products were sold in BCI conferences, international level. I regret to inform that Dr. Kausar Abdullah Malik, Federal Minister Food Security and Research, who confirmed his presence today, but couldn't make it because of the cabinet meeting he is to attend. I know cabinet meeting is more important than any conference. So we will be moving to the next sessions. And before going to the next session, let's have a cup of tea, re-energize ourselves, get our throats back to work again. Okay, so tea is organized, arranged outside, and we will be assembling after 15 minutes. Yeah, okay, thanks. Hello, 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 hello.
Hello, 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 hello.